अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हमने डिस्कस करना है व्हाट आर द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग एस्टैब्लिश बिटवीन सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट बॉन्डिंग एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट बॉन्डिंग। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दैम। अब जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वो नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयनिक कंपाउंड्स। Ionic compounds are made up of positively and negatively charged ion. Opposite charge ion से बनते हैं. They are form of negative and positive negative charged. Thus they consist of ions and not the molecules. Then they form with the ions, not molecules. These positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystal form with strong electrostatic attractive forces. These charges ion that are held together in a solid with a strong force of attraction that is called electrostatic attractive forces. The ordinary range of Na plus and Cl night sodium chloride ions in a solid crystal of sodium is drawn, and they are arranged in a regular form. Regular arrangement of Na plus and Cl minus ions in solid crystal of NaCl. They are arranged in a regular order, and then they make a strong and solid crystal with the strong electrostatic force of attraction. This is the nature of ionic compound. Then we discuss about the ionic compounds have following properties. What are the properties of ionic compounds? First of all, ionic compounds are mostly crystalline solids. Mostly they are solids. Crystalline solids mean they are very strong. They are very strong with the electrostatic forces of attraction. Ionic compound in solid state have negligible electrical conductance, but they are good conductor in solution in molten form. Ionic compound have a solid negligible, बहुत मिनिमम हमारे पास जो है वो सॉलिड स्टेट की आयनिक कंपाउंड की सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है, लेकिन ये गुड कंडक्टर होते हैं सोल्यूशन में और इन द मोल्टन फॉर्म. It is due to presence of free ions in them. It is because of the free ions present in them. Ionic compounds have high melting and boiling points. Ionic compounds have a very high melting and boiling point. For example, sodium chloride has melting point 800 Celsius and boiling point 1413 Celsius. As ionic compounds are made up of positive and negative ions, or these are form of positive or negative ions. They exist strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions, and they have strong electrostatic forces of attraction. So a great amount of energy is required to break these forces, and they're very due to the strong forces of attraction. Then the more lot of energy is required to break these forces. Next one, they dissolve easily in polar solvent like water. Water has high dielectric condense that weakens the attraction between ions. ये पोलर सॉल्वेंट में लाइक वाटर में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयन. जो इसके जो अट्रैक्शन होती है आयंस में उसको वीक कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास covalent compounds. What are covalent compounds? What is the nature of covalent compounds? The covalent compounds are made up of molecules that are formed by mutual sharing of electrons between their atoms. This is the covalent bond are formed by the mutual sharing of electrons between atoms. A covalent compound is generally regarded as weaker than an ionic compound. Then they are because of the mutual sharing, it is assumed to be that it is weaker than the ionic compound. Covalent compounds are made up of two or more non-metals. These are form of two or more non-metals. H2CH4 CO2 8 4 C6H12O6 are the examples of covalent non-metals. Lower molar mass covalent compounds are gases and low boiling liquids. In contrast, higher molecule mass covalent compounds are solids. Some are solids.
Their solid general properties shown by covalent compound are follows. Some properties of covalent compounds are given. They have usually low melting and boiling point. It means that they have low force of attraction. They are usually bad conductor of electricity. The compounds have polar character in their bonding as are conductor of electricity when they dissolve in polar solvents. They are usually insoluble in water but are soluble in non-aqueous solvents like benzene, ether, alcohol, and acetone. Next one, large molecules with three-dimensional bonding form covalent crystals which are very stable and hard and they are very high melting and boiling point. नेक्स्ट है हमारे पास polar and non-polar. As discussed earlier, the polarity in a chemical bond is due to differences in electronegativities of the bonding atoms. On the polling scale, fluorine has been given an electronegativity value of 4. The values for other elements are calculated relative to it. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर कंपाउंड्स डिफर टू सम एक्सटेंट. प्रॉपर्टीज़ ऑफ देम आर some different to some extent. Non-polar covalent compounds usually do not dissolve in water. नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन जो पोलर होते हैं वो यूजुअली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में. सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दे डिडंट conduct electricity, okay, but an aqueous solution of a polar compound usually conduct electricity. लेकिन aqueous solution होता है जो polar compound का वो electricity को conduct कर सकता है. It is because of the formation of ions as a result of its reaction with water. और ये इसलिए होता है क्योंकि इसका डायरेक्ट रिएक्शन होता है वाटर के साथ, तो ये इसकी जो फॉर्मेशन हो रही होती है जब आयंस की, तो इसमें रिएक्शन में वाटर यूज़ होता है, तो इस वजह से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड. Their properties are mostly similar to those of covalent compound. It because the name show coordinate covalent compound, as the molecule in these compounds are held by shared pair of electrons. इसमें shared pair of electrons होती है, therefore they do not form ions in water. और इसमें water में जो है ions नहीं बनाते. Due to their covalent nature they form solution in organic solvents. और ये organic solvent में जो है वो एक solution बना देते हैं covalent nature का. एंड अ वेरी लेस soluble इन वाटर, और ये वेरी मच लेस soluble होते हैं वाटर में. और यूजली दे आर रिजिड कंपाउंड विद द डायपोल में जो है ये वेरी रिजिड कंपाउंड होता है. ठीक है. तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ एंड नेचर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ एंड देयर प्रॉपर्टीज़. तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.